अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द K&A चैनल। मेरा नाम है ज़ैनब काशिफ और आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर शेख शौकत साहब, जो लेक सिटी M1 ऑल्सो नोन एज द बेला विस्टा में रहते हैं। मिस्टर शेख साहब एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जिन्हें गार्डनिंग का बहुत शौक है। उनका घर वाइट हाउस के नाम से लेक सिटी में मशहूर है। आइए मिलते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं नाचीज़ आदमी हूँ और छोटा सा आदमी हूँ और मेरा मकसद कुछ चीज़ें बताने का, खुद नुमाई करना नहीं है। जस्ट इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ कि मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ। तो सबसे पहले मुझे बताएं कि आपका क्वारंटीन टाइम किस तरह गुजर रहा है? My quarantine time was quite interesting. I remain at home most of the time. I tried everybody to stay in. If they go out, वो बाहर भी जाएं तो वो जो भी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है, they should follow it. And I also followed that. कुछ अपने बारे में बताएं कि आपने अपना बचपन कहाँ गुजारा और आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से हासिल की? Yes, I spent my early time in Multan. I went to school there. It was English school, English medium. Its name was La Salle High School. After that, it was a good school. I got good friends, made some good friends there. So after that, I went to government college, and then I did my FSc, and after doing that, I got admission in England. So I went to England for my graduation. तो बिजनेस की तरफ कैसे आए? Yes. After finishing my study, I made a plan that मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं अपना ही काम करूँगा। अच्छी चॉइस थी आपकी। So that's how I initially wanted to do some business, and there was an opportunity. Miller Tractor in Bahawalpur had no distributor at that time. So I went to Rana Saab. He was at that time owner of the Miller Tractors, and a very good family. And he called me at home. I went there. There was an Englishman from Massey Ferguson. They interviewed me, and I told them I run my education in England. So they were encouraged, and they offered me this distribution. That's how I came into business first. After that, after Massey Ferguson, then my family also owned land in Bahawalpur. So the 300 acres, I wanted to do agriculture in a modern fashion. Then after that, then I thought we had a land on the main road from main Karachi trunk road. So there was 10 acres there. So family decided that we should put up a factory there. I put up a cotton factory with 6 surgeons and 1 lint cleaner and 8 expellers, oil expellers. During this business, I made a good friend also. Many people. I give you a small story, but it's quite interesting. I didn't know a person. He came to my shop and he bought some parts from my shop. उसने ख़रीदे तो उसने ट्रैक्टर के लिए कुछ सामान लिया, तो उसमें वो क्लच फिंगर्स होती हैं, तो वो क्लच फिंगर उसने मेरे से ख़रीद के जब ले गया तो वो एक सेट की कीमत एक फिंगर की चार्ज कर दी गलती से। तो व्हेन ही पेड मी ऑल द मनी, तो पे करके वो घर चला गया। जब वो घर गया तो मैंने जब चेक किया कि ये क्या होगा, ये मुझे तो भी कुछ ज़्यादा लग रहा है,
तो आई कॉल हिम घर में फ़ोन किया, मैंने कहा गलती से ऐसे हुआ कि सेट की एक फिंगर की बजाय पूरे सेट की कीमत आपसे चार्ज कर ली, तो आप 4 फिंगर तो 4 सेट्स की कीमत आपसे चार्ज होगी, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, योर मनी इज़ विद मी, यू कैन कम एंड टेक इट एनी टाइम। तो दैट वाज द डे आई वॉन दैट मैन, he became a very good friend of mine. अच्छा, अगर हर शख्स का ख्वाब होता है तो आपने लेक सिटी क्यों सेलेक्ट किया अपना ख्वाब पूरा करने के लिए? मैंने जब मैं भावलपुर से आया लाहौर तो आई वॉज इन ए रेंटेड हाउस, उसके बाद आई स्टार्टेड लुकिंग अराउंड ए प्लॉट वेयर आई वांट टू मेक माई हाउस। तो मैं डिफेंस में गया, उधर मैंने काफ़ी अच्छे घर बने हुए थे, लेकिन घर बहुत अच्छे थे, महंगे भी थे। महंगे तो चलो जो भी बनाना था, महंगे पैसे तो नहीं थे मार्केट के हिसाब से, लेकिन वो सड़कें जो थी ना बहुत नैरो थी, एंड आई फेल्ट क्लॉस्ट्रोफोबिक देयर, कंजस्टेड सा थोड़ा मुझे लगा। तो देन आई लेक सिटी वाज एडवर्टाइजिंग, then I came here and saw the advertisement, then I visited their office. I liked the place because it was quite open field and greenery, and in where I wanted to buy was I wanted a corner plot and I wanted a facing park. Both my requirement could be met here, so I got this plot. So I like this place because it is quite open. हॉबीज़ में तो आपको गार्डनिंग पसंद है, लेकिन अभी भी मेन हॉबी है, और इसके बारे में भी और बताएं। I like because I was a farmer at my heart, so I like to grow flowers and fruit trees. So that's why I got a bigger plot, 3 canal. So I started competing in flower show. So I got first prize, and then after every consecutive year I was participating, and I got first or second prize all the time. So I don't know the year which has gone without any prize, except this Corona year. स्पोर्ट्स में आप कितने एक्टिव हैं? Sports, I used to play golf in Bahawalpur in Garrison Club. I was member of Garrison Club. So I played a lot of golf there, and my son also started playing with me. He hardly could hold the club. आपने किसी टूर्नामेंट में हिस्सा लिया? Oh well, I was not a very good player, but I was just enjoying myself. कुकिंग या बेकिंग में आपका कोई एक्सपीरियंस? Cooking, I never enjoyed cooking. I was cooking when I was in England because there was nobody except myself. I have to cook for myself because every day you can't go to the restaurant, you know. So if you want to make your food mass, then call me. अगर आपके पास इन्फिनिट मनी हो तो कौन सी सबसे पहली चीज़ पे उन्हें स्पेंड करेंगे आप? I think I have no desire for any big thing. God has blessed me with a lot of things, and only thing I enjoy now is to do some charity work if I got money. अच्छी बात है। कोई फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस? Oh, I am not a big fan of films, but I like Sophia Loren, and I like Muhammad Ali, Pakistani actor. I like him; he's a good character. So that's about all. I enjoy seeing film, but not very particular about actor and actress. नेक्स्ट सेगमेंट है रैपिड फायर। इसमें आपसे कोई सवाल पूछा जाएगा और आपने आंसर करना है 1 वर्ड इन अ सेकंड। Right. मैरिज अरेंज्ड और लव?
you start with rain and then you do love. Fast food or homemade? Homemade. Drive fast or slow? Fast. इमरान खान, नवाज शरीफ या जरदारी? Imran Khan. शलवार कमीज या पैंट शर्ट? Pant shirt. पिज़्ज़ा या बिरयानी? Biryani. थैंक यू फॉर द फन पार्ट एंड रैपिड फायर. आप मैसेज में आप यंग जनरेशन को 14 अगस्त के हवाले से कोई मैसेज देंगे? I want to say two things. एक पहली चीज़ है be honest. When you are honest, then you are brave also. When you are honest in your commitment, then you become brave and you become more self-composed. So that is the first thing. And second thing for young generation is that you should put yourself in a test all the time. Give yourself a difficult challenge, a difficult target, and then try to meet it. You will find your capabilities and abilities will grow and come. You will learn. And sometime it happens that you bring out such a great thing that you are yourself very surprised how you could do that. So that's how you improve your personality and aura. That's how you improve yourself. कोई मैसेज जो आप नॉन रेजिडेंट्स को देना चाहते हैं लेक सिटी से हवाले? Yeah, I would like they should come and see Lake City, and there are a lot of good people living here. Friendly environment. Very friendly environment. The houses are good. The architecture is good, and there are good gardens, parks, and for children there are playgrounds. So I think with time it is getting better and better, because now we got cinema, we got a good, very huge mosque, Jamia Masjid, and we got K&A here, and that is a good service to the community. And there are now more medical stores, and restaurants. And now this gym will also coming up. Golf club is going to open. So I see that it will become even better. Life will become even better than it is today. लेक सिटी को क्या इम्प्रूव करना चाहिए फर्दर? I think लेक सिटी को काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव करनी चाहिए जो इन्होंने पहले क्रिएट की थी, कि जैसे चिल्ड्रन का पार्क है तो उसमें जो झूले वगैरह लगे हैं तो they need repair, their bearing need to change. There are many things to be done. Some things are broken, they are to be fixed. They should do that. There were ponds, they should start the pond, and there were lights around the pond. They have finished that. They should put them back. I think you can do a lot of improvements, you know. शुक्रिया इस इंटरव्यू के लिए. प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ख़ुद किसी को नॉमिनेट करवाना चाहते हैं या अपना इंटरव्यू देना चाहते हैं तो फिर इस नंबर पर कांटेक्ट करें. अल्लाह हाफिज़.